Sir. Can't see the video. Others, can you see the video? Yes, sir, we can see. Yes, sir. So if you can just log out and log in again, please. Okay, sir. Yes, I can see now. Okay. So ownership's course is WO 275 18 knots, and the target bearings and ranges are given 1500 hours, 235, 12 miles, and 1506, 235, 10 miles, and 1512, 235, 8 miles. Now write down the question. At 1514, at 1514, target is identified as a vessel NUC. Sir, could you repeat again, sir? Sorry. At 1514, target is identified as a vessel NUC. Master of ownership decides to alter course at 1515 so as to ensure Ownership at master of ownership decides to alter course at 1515 so as to ensure a CPA of 2 miles. Find number 1, the course alteration required to let the target pass ahead of ownership and hence the new TCPA. And hence the new TCPA time. Number 2, find the course alteration required to make the target pass astern of ownership
and hence Sir, to make the target pass. astern of ownership and hence the new TCPA time. Point number 3. State which action, one or two, is in accordance with ROR and why. So let us start with the plotting. So which scale would you like to use? Third. Third. Okay. Now whenever you are given multiple observations like this, 3, 4, 5, 6, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतनी सारी निकालें, तो हम हमेशा पहले ही ले लेते हैं और लास्ट ले लेते हैं. दैट्स इट. बीच की सबको नेग्लेक्ट कर दो. ठीक है? इज दैट ओके? Because we don't have the time for doing so much plotting. Imagine 3 targets, 6 observations given. तो 18 observations को करते करते ही 25 मिनट निकल जाएंगे. So you'll just pick up the first, pick up the last. That's it. So start with two, 3, 5, 12 miles. सर ये OW 6 मिनट के लिए रहेगा ना डिस्टेंस? ट्रायंगल कितने मिनट का बना रहे हैं हम? बारह मिनट. मैंने अभी आपको तरीका बताया है कि फर्स्ट और लास्ट बीच के गायब कर दो, तो आपका ट्रायंगल कितने मिनट का बन रहा है? आपके ट्रायंगल तो 12 मिनट का बन रहा है ना. ओके. So 18 knots, 12 minute. How much distance do you get? 3.6. 3.6. So at 275, 3.6 miles काट दो.
The CPA required is 2 miles. So with Charlie, draw a goal chakkar of 2 miles. The course alteration is to be done at 15-15. So predict position P of the target at 15-15. Let's try to understand the situation. Target is at Alpha, heading WA. I am at Charlie, heading 275. Target is on my port side. If I want to allow the target to pass ahead of me, which side should I alter so that the target passes ahead of me? Sir, port side. Starboard side. भाई ahead of me तो मैं starboard कैसे जा सकता हूँ? Port side, sir. starboard तो जाऊंगा तो ऐसे कैसे होगा? नहीं होगा. मुझे port side जाना पड़ेगा ना. मुझे ऐसे जाना पड़ेगा. अगर मैं ऐसे जाऊंगा. not follow call reg over here. अरे भाई क्वेश्चन पढ़ो. रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या लिखा है? अहेड से पास कराना उसको. क्वेश्चन कहता है आई हैव टू अलाउ द टारगेट टू पास अहेड ऑफ मी. अभी टारगेट ऐसे जा रहा है, मैं ऐसे जा रहा हूं. अगर मुझे टारगेट को मेरे आगे से निकालना है तो मेरे को पोर्ट जाना पड़ेगा ना. मैं ऐसे जाऊंगा तो टारगेट ऐसे मेरे आगे से जाएगा. अगर टारगेट मेरे आगे से जाएगा तो मैं टेंजेंट किस साइड ड्रॉ करूं? दैट इज द मूट क्वेश्चन. विच साइड शुड आई ड्रॉ द टेंजेंट? Sir, on the north side of the sea. North side. Is that agreed with everybody? I have Yes, to. Yes, sir. Yes, sir. For ahead target north side. So ये टारगेट मेरा ऐसे जाएगा. टारगेट मेरे इधर से जाएगा. मैं नीचे जा रहा हूं ऐसे, तो टारगेट मेरे नॉर्थ से निकल के जाएगा. इज दिस ओके विद एवरीबॉडी? Call this point as N1, जहां पे वो टेंजेंट ड्रॉप करी. Sir, regarding this tangent line, so हाँ जी. follow this method also ki like, okay, if we, because we have to transfer this tangent to the point A, and that Correct. tangent fall in That's between right. between the triangle that is we have solved for 12 minutes. So like if we transfer, then this will fall in between the triangle, but if we take it to the south side of this, then it will go outside, because when we do the reverse of this, because this same observation we have done in the last example also yesterday, so this can be in. अभी ना एक बारी मुझे क्वेश्चन खत्म करने दो, फिर मैं डाउट्स क्लियर करूंगा. नहीं तो मैं क्वेश्चन से आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा.
Let me finish the question, then I will clear all doubts. But I need to finish the question. मेरे को भी खत्म करने दो क्वेश्चन पहले. Then I'll clear the doubts one by one. Okay, is that all right? Because otherwise we'll never be able to move ahead. फिर मेरे को डाउट क्लियर करूंगा मैं, बट पहले अभी तो मैं क्वेश्चन मैंने अभी करा ही नहीं है, कुछ डाउट स्टार्ट हो गए हैं, तो इसलिए मैं लेट मी फिनिश द क्वेश्चन फर्स्ट. This is a tangent. I have to transfer this tangent backward. Through which point should I transfer? A. Point A. Okay. All backward transfers are always done through A, right? So I put my ruler at PN1 and transfer it through A, and I draw a parallel line. This is my parallel line. Now I am altering course to port. So WO will become WO1. So speed is the same. So with radius as WO, center at W, cut an arc. ये arc काटी यहाँ पे. Call this point as O1. Join WO1. In this diagram, WO is equal to WO1 because the speed is the same. Now WO1 becomes the new course is WO1 with port alteration, and this will allow my target to pass ahead of me. That's fine. I think that you're getting correct answer. The new course is 249. So if you're getting 251, that's fine. So somebody might get 251, somebody might get 247, somebody might get 250. All that is acceptable. Yes, sir, 250. Yeah, that is all acceptable. No issues. So that means alter course. How many degrees to port? That is 26 degrees to port. 26 degree port. Okay, 26 डिग्री पोर्ट. सो अगर मैं 26 डिग्री पोर्ट ऑल्टर करता हूं तो टारगेट मेरे 2 माइल आगे के सीपीए से मेरे आगे से पास करता हुआ जाएगा. नाउ यू पुट योर डाउट्स टू मी. नाउ अब डाउट्स पूछो, क्या पूछना है. सर ये WO1 एक बार फिर से बताना सर. WO1, okay. So basically what I am doing is that my speed is the same. मेरा स्पीड ऑल्टर नहीं हो रहा है. मैं अभी भी 18 नॉट्स में हूं, वही मुझे 3.6 माइल करना है. तो विद रेडियस एज WO, कंपस एट W, आई ड्रॉ एन आर्क. जहां पे इस आर्क ने उस पैरेलल लाइन को काटा, उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया O1 और WO1 को मैंने ज्वाइन कर दिया. So two triangles are made. WOA is of 12 minutes and WO1A also of 12 minutes. Is that okay? Yes sir, correct. हाँ जी. Now any other doubt? सर मेरा 240 आ रहा है सर इसमें. Is that acceptable? 240 acceptable नहीं है. इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका पेपर मूव किया है, most likely. So just try to freeze your paper now. So you'll have to devise some mechanisms by which you can freeze your paper. So उसके तरीके हैं 2-3. एक है वो जो आते हैं बॉस्टिक, अगर वो ले लो तो उससे वो you can stick it
to the table. The other is वो मैकेनिकल ड्राइंग के वो क्लिप्स होते हैं जो टेबल पे लग सकते हैं, वो ले लो. So I leave it to you how you want to pin your paper to your table. Either you want to clip it, जो मैकेनिकल ड्राइंग के क्लिप्स होते हैं वो स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएंगे once the stationery shops open, और just check it on Amazon, वहाँ पे मिल जाते हैं कि नहीं. They're small little clips जो ये टेबल के एज पे लग जाते हैं. So they will ensure that your sheet does not move. Because ये समस्या रहेगी इसके साथ आपकी कि ये मूव करता है. सर बट ये वेरिएशन मतलब आंसर में वैसे कुछ है, कितना लिमिट तक अलाउड रहता है? कोई ऐसा वो नहीं है. There is nothing like that. Method is the most important thing in this. So there's nothing prescribed. There's no error which is prescribed as such. But अगर 240 किसी का आ रहा है तो मैं जब the moment I will go deeper into it, मैं अपना पैरेलल रूलर डालूंगा to check it, तो मुझे कोई ना कोई उसमें मिस्टेक नजर आ जाएगी. चक्कर ये है. So from that perspective I'm saying just try to minimize your errors as much as possible by these methods which I'm sharing with you. ओके सर. So one more thing, sir. Sir, like this हाँ is the जी. collision course. We are keeping the bearing 235. और आपने बोला will miss 15. Bearing is or 2-3. अच्छा हाँ, okay, collision course है. हाँ. Yes, sir. We'll miss this 15 or 6. And sir, अगर इसमें हमारी bearing different होती, then also we can miss the middle one. 1500, दोबारा बोलो. 1506, 1512. तीन हाँ. बेयरिंग है. आपने बोला हाँ. कि लाइक वी आर हैविंग अ डिफरेंट बेयरिंग, हम सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाली लेंगे, बाकी वाली हम छोड़ देंगे. इसमें तो बिल्कुल ठीक. बेयरिंग सेम है एंड वी आर लीविंग नाउ. अगर ठीक बेयरिंग है. डिफरेंट होगी तब भी हम तो छोड़ भी सकते हैं. बिल्कुल ओके सर. बिल्कुल. बेसिकली चक्कर क्या है कि मेरी जो कोई भी हो लाइन मेरी, सपोजिंग एक ये आ रही है, 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 तो ये लाइन तो मेरी यही फॉलो करेगी, अप्रोच लाइन. मैं यहाँ पे हूँ चार्ली में, सपोजिंग ये टारगेट की अप्रोच लाइन है, तो मैं ये और ये गायब कर रहा हूँ टू सेव माई टाइम. मैं ये कह रहा हूँ. ओके सर, थैंक यू. सर इसमें कोई इंटरवल लिमिट भी है क्या कि मतलब नहीं अगर लेट्स से 12 से एक्सीड करिए कोई इंटरवल तो वो नहीं लेनी है, 12 तक ही लेनी है? नहीं ऐसा कुछ नहीं. ऐसा कुछ नहीं. फर्स्ट एंड लास्ट सीधा. ओके सर. सीधा. बिकॉज क्योंकि जब आप इमेजिन करो जब 3 टारगेट होंगे और 4 बेरिंग्स दी हुई है हर एक टारगेट की, मतलब 4 into 3 12 ऑब्जर्वेशंस को प्लॉट करोगे, बाय द टाइम आप लाइन ही खींच पाओगे आपके 25 मिनट खत्म हो जाएंगे. फिर क्या करोगे? तो यू हैव टू डिवाइस दीज मैकेनिज्म. दीज आर द ओनली वेज टू डू इट. ठीक है. ओके. एनीथिंग एल्स? ओके सर. ऑलराइट. सो ये हमारा पहला पार्ट हो गया. अब मैं दूसरे पार्ट पे आ रहा हूं. तो दूसरा पार्ट कहता है आई हैव टू अलाउ द टारगेट टू पास स्टर्न ऑफ ओनशिप. अब फिर से वापस मैंने रखा, ये टारगेट है, मैं ऐसे जा रहा हूं. अब जब मैं चाहता हूं कि टारगेट मेरे स्टर्न से जाए तो मैं किस साइड पे ऑल्टर करूंगा? स्टारबोर्ड. Does everybody agree? Does everybody agree? Yes, sir. यस सर. मैं स्टारबोर्ड जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा. जब मैं स्टारबोर्ड जाऊंगा तो लाइन ऑफ अप्रोच किधर जाएगी? नीचे. नीचे. तो टेंजेंट किधर बनाऊं? South में. साउथ में. Does everybody agree on this? Yes, sir. Okay. So अब मैं टेंजेंट साउथ में बना रहा हूं.
जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट है उसको मैंने नाम दिया N2। ओह, मैं पिछले वाले का मैं TCPA निकालना भूल गया था, सो TCPA भी निकालना है। I forgot that, sorry। TCPA 1 will be equal to, what will be the formula? 151 EN by 1515 PN1 O1A O1A into 6 into 12 प्लीज गड़बड़ मत करो, बार बार बोल रहा हूँ। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पैरेलल लाइंस, कॉमन इंटरवल 12 मिनट, तो 15 एंड दैट विल गिव यू योर TCPA। $1532 हाउ मच? 1532 सर मेरा 1531 हाँ, 1531 ही आंसर है, तो 1531 32 ऑल आर ओके। All right, now coming on to the second part। So अब मेरे को PN2 मैंने टेंजेंट बना ली है, इस टेंजेंट को अब बैकवर्ड ट्रांसफर करना है, तो किसके थ्रू ट्रांसफर करूं? सर एक की तरफ ए की तरफ। सो ए की तरफ ट्रांसफर किया, सो इधर मैं रूलर रखा, ट्रांसफर किया, ये आ गई। ओके, अब क्या करूं? तो WO का रेडियस लेके वो बैकवर्ड वाली लाइन में कर देंगे। बिल्कुल ठीक, WO का रेडियस लिया और इधर में स्टारबोर्ड को काट दिया। जहां पे उसने काटा उस पॉइंट को नाम दे दिया O2। जॉइन WO2। join WO2। So new course WO2, 296.5 296 is the answer. So if somebody is getting 294, it's fine. Somebody is getting 295, it's fine. Somebody is getting 298, it is fine. All that is okay. This will be your starboard alteration. That is alter course. How many degrees to starboard? So this will be 21 degrees to starboard. Okay. Now to find the new TCPA. So TCPA 2, 15 plus PN2, डिनोमिनेटर में पैरेलल लाइन, सो O2A 1543 1543 1541 is the answer। 1543 आ रहा था। ठीक है, that's fine, that's fine। 41 is the टाइम answer। अलग आएगा। हाँ जी, टाइम तो अलग ही आएगा ना, क्योंकि आपका जो टेंजेंट तो इक्वल है, PN1 is equal to PN2, लेकिन आपका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। O2A जो है वो कमती है, वो कमती है, तो इसमें फिर जैसे आप इसलिए लोग जब टेंजेंट पॉइंट लेंगे N1 एंड हम्म, N2 तो वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पे
पॉइंट ऑफ टच लेते हो ड्राइंग के हिसाब से। वही वही इसीलिए वहां पे आपकी शार्पनेस ऑफ पेंसिल मैटर करती है, वहां पे आपकी ऑल दीज बेसिक थिंग्स विल मैटर नाउ। सो तो मतलब एग्जाम में जब जैसे जिसने जो PN1 मेजर किया तो वो उतना ही PN2 लेना ठीक ले है। लो, बिल्कुल, because you know the property of the tangent. Basically the tangents to a circle are equal, you know that from a fixed point, so therefore you can use that property. ओके। हाँ जी, any doubts in this one? Starboard alteration. All okay? Okay. Yes, sir. Supposing मैंने आपको इस क्वेश्चन में दिया होता no alteration of course, only reduction of speed, तो कैसे करते? सर ओ डैश W पे सर W को जो स्पीड कम कर देते। the line will put back, so वो W new one will be our reduction. न्यू आर्क ऑन द W सेम रहता है सर बट ये उसमें लाइन जो स्पीड। पीछे पैरेलल खींचेंगे वो यहाँ W कट करेगी, वो हो जाएगा। Yes, sir, the कौन सी वाली parallel line लाइन? which cut Yes, sir. W where it न्यू cuts रिलेटिव O अप्रोच लाइन को जब हम पीछे ट्रांसफर करेंगे A से, वो यहाँ पे उसको कट करेगा WO को। सो बेसिकली जो PN1 लाइन बैकवर्ड ट्रांसफर किया वो ये वाली लाइन थी, यहाँ पे जहाँ पे इसने काटा ये पॉइंट को नाम दे दिया O3. This will WO3 will be the reduction of speed, no course alteration. Is that okay? सर ये रिडक्शन ऑफ स्पीड फॉर 12 मिनट्स इंटरवल हो जाएगा ना, फिर हम उसको 1 आवर के हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। That's right. ये 12 मिनट के लिए हो गया, WO3 मेजर कर लिया, ये 12 मिनट के लिए हो गया, तो 60 मिनट के लिए कितना है? ओके। So is reduction of speed all right with you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. All right. अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट सर अगर कहता है, सेकंड हाँ जी, सर अगर सेकंड पार्ट में रिडक्शन ऑफ स्पीड होता तो सर कौन सा होता? सेकेंड पार्ट में रिडक्शन ऑफ स्पीड हो ही नहीं सकता। We never do alteration of course and reduction of speed together. ओके ओके सर ओके। Why? Why we never do? At sea, we never do alteration of course and reduction of speed. So supposing मैं hard starboard देता हूँ, आपको बोलता हूँ hard starboard, and simultaneously मैं बोलूँ dead slow head. I'll never do that. तो फिर लीवर कम हो जाता है, वो मुड़ेगा नहीं। Maneuverability कम will हो be less in that case. sir. Maneuverability will be affected. बेसिकली जो मैं ऑल्ट्रेशन से जो एडवांटेज गेन करना चाहता हूं वो मैं रिडक्शन ऑफ स्पीड से उसको निगेट कर रहा हूं। सो दो चीजें कर रहा हूं मैं, दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। एक तरफ मैं आपको बोल रहा हूं हार्ड स्टार्बोर्ड, दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूं नहीं डेड स्लो हेड भी करो फुल हेड से। So it defeats the basic purpose which I wanted to achieve with hard starboard. So as a master, I will always do only hard starboard. जब hard starboard खत्म हो जाएगा, स्टेबल हो जाऊंगा मैं, उसके बाद dead slow head बोल सकता हूं। So I'll either do alteration of course only, or I'll do reduction of speed only at one time. ठीक है? Is that okay? Only pilots do this. Pilots करते हैं ये, because जहां पे टाइट मैनूवर होता है, सपोजिंग 90 डिग्री बेंड है रिवर्स में, I have to go alongside, right? There's a knuckle on the right starboard side. I have to go alongside there to the knuckle. So what does a pilot do? He gives immediately stop engine, full astern. The bow starts canting to starboard, hard starboard. जैसे ही 20 degrees off the course, stop engine, midship, get slow head.
Pilots do that very often, right? So what is he doing? He is basically doing a combination of course alteration and speed reduction at the same time because the room is very small for him to maneuver. So pilots do that because they are capable of doing it. We guys are not capable of doing this maneuver. It requires a lot of experience to do this. और हमारे को जरूरत भी नहीं होती, तो इसलिए हम लोग खाली ऑल्ट्रेशन करते हैं एक टाइम पे, जब वो खत्म हो जाती है फिर रिडक्शन ऑफ स्पीड करते हैं एक टाइम पे. Okay, so coming back now, the third part. Which one of this is allowed as per ROR? Second. Second is allowed as per ROR. Anybody else? Sir, So basically, ये मेरा वेसल है, ये वेसल NUC है. This is the situation. So एक एक्शन ये है, एक एक्शन ये है. ये स्टार्बोर्ड ऑल्ट्रेशन है, ये पोर्ट ऑल्ट्रेशन है. Which one is allowed as per ROR? Which rule? Sir, both we can do, sir. As per the responsibility between the vessels. Because we have to just. So which rule are we talking about? Responsibility between vessels. So we are talking about Rule 18. As per Rule 18, it is my responsibility to keep clear. It is my duty to keep clear. Duty to keep clear of a vessel NUC. So any which way I can keep clear. I can go to starboard, I can go to port. Both options are acceptable. Both options are acceptable. Now the question is, which one will you choose? Which one will you prefer and why? अब वो आ जाता है, ये important point है. to pass the stand. Alter to port. Which one will you prefer and why? अब ये choice करो अपनी, और अपना reason भी देना पड़ेगा. जो भी बोलोगे reason, तो उसमें reason भी बताओगे कि क्या है, क्या logic use कर रहे हो. First one, sir, because TPCA is less. So, or you are preferring alteration of course to port. Starboard will be better because if the vessel alters to port, then we'll be in trouble if he alters to starboard and if we alter to port and we alter to port, then we'll be in trouble. NUC है ना, तो वो क्या alter करेगा? तो NUC है तो alter करेगा नहीं ना. वो तो NUC है, वो Sir, तो alter course starboard because if you alter starboard, our starboard side will always be clear. Yes. See, For the future situation, starboard side will be clear. तो एक चीज बड़ी क्लियर रखनी है कि अगर मैं स्टारबोर्ड जाता हूँ तो मेरी स्टारबोर्ड साइड जो है वो मैं क्लियर रख रहा हूँ अपनी, ताकि उसके बाद भी मुझे कुछ और भी करना पड़े ऑल्ट्रेशन तो भी मैं ऑल्टर कर सकता हूँ. सो यू टू रिमेम्बर दैट. Yes, sir. Okay. So you have to keep that in mind, basically.
सो कीप दैट इन माइंड कि अगर मैं स्टार्बोर्ड जाता हूँ और मेरी स्पीड क्या है, अपनी स्पीड देखो, मैं 18 नॉट कर रहा हूँ और मैं वेरी फास्ट वेसल, राइट, प्रॉब्ली अ कंटेनर शिप, प्रॉब्ली व्हाटएवर, तो मैं स्टार्बोर्ड जाके अपनी स्टार्बोर्ड साइड को क्लियर रख रहा हूँ, प्रूडेंट सीमैनशिप। अगर मैं पोर्ट साइड जाता हूँ तो इस दौरान जब तक मैं ऐसे पीछे से नहीं जाऊंगा इसके, तब तक ये मैं अपनी स्टार्बोर्ड साइड को ब्लॉक कर रहा हूँ। अगर कोई और ऑन गोइंग ट्रैफिक आएगा तो मेरे पास स्टार्बोर्ड साइड में मूव करने के लिए कोई जगह नहीं होनी, मैंने ब्लॉक कर लिया अपना स्टार्बोर्ड साइड। तो इसलिए आई विल प्रेफर टू alter course to starboard to keep my starboard side clear at all times as per prudent seamanship or observance of good seamanship. Rule 2, responsibility. As per prudent seamanship or observance of good seamanship. Rule 2, responsibility. It is my responsibility to keep clear. So therefore, I am keeping my starboard side clear at all times. Can I alter to port? Yes, I can. I'm not trying to deny that. ठीक है? Is this okay with everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Okay. अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जब ओनशिप एक्शन लेता है कभी कभी ओनशिप जब एक्शन लेता है तो जब एक्शन लेता है जहाज हमारा, तो वो इंस्टेंटली इफेक्टिव नहीं होता। ओके, इंस्टेंटली इफेक्टिव नहीं होता मतलब वो थोड़ा सा टाइम लेता है। मैंने अभी ऑल्टर किया एंड उसके बाद उसने थोड़ा टाइम लेके वो नए कोर्स पे आया, या मैंने स्पीड रिड्यूस करी, उसने टाइम लिया और फिर वो स्पीड उस पे आया, नई स्पीड पे। सो ये जो टाइम डिले है, इसको हम दो हिस्सों में बांट ले सकते हैं। या तो इसको हम कह सकते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ कोर्स में हो रहा है, या ये हो रहा है मेरी रिडक्शन ऑफ स्पीड में। अगर ये ऑल्ट्रेशन ऑफ कोर्स में है तो इसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस डिले, पीडी, परफॉर्मेंस डिले। और इस परफॉर्मेंस डिले का एक नया नाम भी है जिसको हम कहते हैं टर्निंग टाइम, टीटी।
परफॉर्मेंस डिले और टर्निंग टाइम मतलब एक ही है, टाइम टेकन बाय द वेसल टू टर्न। मैंने अभी हार्ड स्टार्बोर्ड दिया, अभी मैं नॉर्थ स्टीयर कर रहा था 000, I want to go to 050, so मैंने हार्ड स्टार्बोर्ड दे दिया, तो the vessel will take some time and then start swinging to starboard. फिर एक टाइम आया जब मेरा जहाज 050 पे सेटल कर गया इस पॉइंट पे, एंड यहां से आके आगे चलता जा रहा है 050 पे। तो the time that it will take from when I gave hard starboard to the time I settle down on the new course is called as turning time, also called as performance delay, and it's connected to alteration of course. So during this period, my ship will actually be going along a curve of a circle, an arc of a circle. How do I show this arc on the circle? I cannot. So how do I resolve the situation? In the question, I will be given PD time, performance delay, is 3 minutes. Performance delay is 3 minutes. So, supposing this is a point Q, this is a point R. Q to R is 3 minutes. So, I do 50% of the PD time. Supposing I altered course at 1000 hours and I settled at the new course at 1003. So 50% of PD time will be 1.5. 1.5. So I draw a 10 and a half, 10, 1.5. That means along the new course, along the old course, and along the new course, this is my point P. Point P, I am predicting for 10, 1.5 hours. That is how I will show it on the plot. I will show a plot PQ along the old course for and predict position P for 10, 1.5. And from P, the ship is assumed to be going along the new course. So I don't need to show this curved path on the plot. So basically, my vessel will be going along this line. Have you understood what I am trying to say? Yes. So, sir, half of the PD will be on the old course and half will be on the new course. Absolutely right. Half of the PD is on the old course and half of the PD is on the new course. Is that okay? Yes, sir. In the question, you will be given PD time. आपने खाली उसको आधा कर देना है. That's what you will do.
So if PD time is given to you as 5 minutes, you will take it as 2.5 and add it to the time the alteration order was given. If PD time is 6 minutes, then you'll make it 3. That's how you'll do. So 50% PD time, just remember. So is this okay? Reduction of speed is called as head reach. Reduction of speed is called as head reach. So how do we define head reach? So basically मैं इस वक्त जा रहा हूं 15 नॉट्स पे, फुल हेड पे. अब मैंने अपने इंजन को दे दिया स्टॉप. From now onwards, my vessel will start to retard. And let's say I take 4 miles. And after I will come to a dead halt. The time I will take for this period, let's say, before I come to a dead halt is 15 minutes, supposing. So what have I done? मैं फुल हेड पे जा रहा था, मैंने अपने इंजन को स्टॉप कर दिया immediately. My vessel kept on retarding, and it took 15 minutes, and it traveled 4 miles in the meantime. So 4 miles and 15 minutes is my head reach. To come to a standstill. To comes to a standstill. It means from full ahead to stop engine. Not full astern. Full ahead to stop engine. So the time taken and the distance traveled from full ahead to stop engine is known as head reach. ठीक है? Is that okay? Yes. Yes. So basically, this is time taken and distance traveled. This is known as head reach. ये PD परफॉर्मेंस डिले, टर्निंग टाइम 50%, ये उस वाले फंडे पे काम करता है. ओके Sir, I had question on the COP, sir. COP. ये सर क्वेश्चन नंबर 7 में सर जो अपेंडेज वाला है सर, उसमें अपेंडेज का सर जो मोमेंट निकालना है सर, वो ऐड करना है उसमें सर. 2 बार मोमेंट उसका निकलेगा ना. 1 मिनट, क्या क्वेश्चन नंबर 7 है क्या? After bulkhead and then they have a appendage below. Let me just have a look at the question. Basically, you have to use the same fundas जो हमने वो 2 shapes का किया था ना, तो दोनों shapes को अलग-अलग करके ट्रीट करके ये शेप, ये अपेंडेज अलग पीस बना हुआ वेल्डेड है कि इज इट
part of the same curvilinear shape. वो अलग से रेक्टेंगल है सर. रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का अलग से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लोगे, वो आपको पता है LB क्यूब बाई ये सर 12 LB क्यूब बाई 12. प्लस AD2 स्क्वायर, वो जो हमने किया था. हाँ सर. तो डेप्थ साउंडिंग प्लस 0.5 जो भी जो है भी. whatever, तो दैट विल बी प्लस AD2 स्क्वायर कर दो और फिर वाटर लाइन पे ले जाओ और वाटर लाइन पे दोनों को ऐड कर दो जैसे हमने तो वो किया था पहले. हाँ तो सर उसका सेकंड मोमेंट है जो मेन बल्कहेड है, हाँ. उसका जो IWS है उसमें इसका IWS ऐड करेंगे सर. करेक्ट. वो करने में गलत आ रहा था इसलिए वो हाँ. जो कंबाइंड D आ रहा था वो गलत आ रहा था. कंबाइंड डी तो करने की जरूरत ही नहीं होगी आपको निकालने की. तो थ्रस्ट कैसे निकालेंगे सर अगर कंबाइंड D नहीं आएगा तो? अच्छा कंबाइंड, ओके. अच्छा थ्रस्ट निकालने के लिए बात कर रहे हो. यस. हाँ तो so combined D will be total first moment of area divided by total area. यस सर. तो टोटल फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया ये सर 3. तो इसका जो फर्स्ट मोमेंट रहेगा सर वो अपेंडेज का रेक्टेंगल का वो क्या रहेगा सर? दैट विल बी एरिया इनटू लीवर. एरिया इनटू लीवर. ओके. So 7.6 into the lever from water surface. Okay, that will be first moment. Okay. That will be first moment. Okay, तो ट्राई करके देखते हैं. या ठीक है सर. एक क्वेश्चन मेरे को पूछना था, एक छोटा सा कोई क्वेश्चन सर. पास पेपर्स में एक ऐसे बीम का क्वेश्चन है जिसमें वेट ऑफ बीम दिया हुआ है, मतलब दे हैव मेंशन वेट बट द यूनिट इज इन केजीज और वो राउंड फिगर में है. हाँ ये भी कई बार होता है कि वो केजीज में दे देते हैं और राउंड फिगर में दे देते हैं. तो अब उसको मैं क्या करूं, मैं उसको 9.81 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर वो डेसिमल में बन जाएगा मेरा. फिर तो कर्व नहीं बनता, अगर डेसिमल में निकालेंगे तो कर्व नहीं बनेगा. तो वो फिर और कॉम्प्लिकेट मैं खुद कर रहा हूँ. तो मेरे पास दो ऑप्शन है, 10 से मल्टीप्लाई कर, या तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा वो होल नंबर बन जाएगा. तो आई राइट ओवर देयर एज्यूम g इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड सो एज टू ऑब्टेन अ होल नंबर. एक तो तरीका ये है. ठीक है, इज दैट ओके? ओके सर. एक तो तरीका ये है. दूसरा तरीका ये है कि मैं वो 10 किलो उसको किलो ही रखूं. दैट मीन्स मैं उसको न्यूटन में ना लूं. तो सपोजिंग मैं किलो रखता हूँ, 10 किलो, 30 किलो, 25 किलो, वट एवर इज द डाउनवर्ड फोर्स. पी एंड क्यू निकालता हूं इन टर्म्स ऑफ किलो. ओके सर. कर्व मेरा सेम बनेगा. यस सर. मेरे को के शेप ऑफ कर्व चाहिए. तो सर उसमें ये कर्व बनाने के बाद ये नोट लिखना पड़ेगा क्या कि जो भी एसएफ की वैल्यू कर्व से निकालेंगे उसमें 9.8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्चुअल वैल्यू के लिए? वो तो वैल्यूज तो वो पूछता ही नहीं है, वो तो खाली कर्व से मतलब रखता है कि एस एफ बी एम कर्व बनाना है. तो वो कर्व मैं या किलो से बनाऊं या न्यूटन से बनाऊं, कर्व कर्व ही वही रहेगा. कर्व बदलने वाला नहीं है. ओके सर, मतलब वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता है, शेप मैटर करती है. शेप मैटर करती है. ओके, फिर तो केजी वाला ही ठीक है. सो अब मेरे पास दो ऑप्शन है. या तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, होल नंबर है, और उसको न्यूटन में कर दूं कन्वर्ट, दैट इज ऑल्सो फाइन, दैट्स परफेक्टली फाइन. या मैं उसको किलो ही रहने दूं. ओके सर. बोथ आर ओके. So generally in the past batches I have been advising everybody कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा आसान है. That's what I've been telling everybody कि 10 multiply by 10, no problem.
ओके सर। ठीक है, इज दैट ओके? यस सर। चलो, अब वी हैव गॉट वन मोर क्लास टुडे, लास्ट क्लास, सो उसमें ये पीडी एंड हेड रीच करेंगे। ओके सर, सी यू। सी यू।